Assalamu alaikum students, open your maths book, countdown book. Okay, it's your countdown class time. So it's my lecture number 12 with you. Today we are going to start week number 9 and kindly open your book page number 53. Here the concept of multiplication is given. What was the first before starting multiplication you have to know. Before starting multiplication, you have to know what was the symbol of multiplication. So here this cos sign is used to represent multiplication. Whenever this sign is placed between two values, it means these two values are multiplying. For example, here I have a value 2, then this sign, and then 4. This is a sign of multiplication. This is a sign of multiplication. These two values are going to be what? Multiply. 2 4s are 8. 8 is the answer. This is the sign of multiplication. Here the two values 2 and 4 are going to be multiply and the answer is 8. So today I am going to give you the concept of multiplication. So two friendly octopus. These are two friendly octopus. Each octopus has 8 legs. Let's count the legs of one octopus. You will know what was the number of the legs of octopus. I am counting the legs of this red octopus. 1 2 3 4 5 6 7 8. So the number of legs of this octopus is 8. So each octopus, this red one and green one, both have how many legs? 8 legs. So what was the number? Both have how many legs? Both have 8 legs. And we have how many octopus? 1 2. We have 2 octopus and each have 8 legs. So the number of octopus is 2 and each has 8 legs. So what was the total number of legs? How you will get it? By simply multiplying the number of octopus, that is 2, with 8. This is the sign of multiplication. 2 8s are 16. So 16 is the answer. So next example is 3 flags flying. Here there are 3 flags. हमारे पास क्या है? How many flags? Number of flags कितने हैं? 3. 1 2 3. 3 flags हैं, 3 झंडे हैं. Each flag has 5 stars. हर फ्लैग के अंदर कितने स्टार्स बने हुए हैं? 5. लेट्स काउंट द स्टार्स ऑफ वन फ्लैग. 1 2 3 4 5. इस फ्लैग में कितने स्टार्स हैं? 5. इसके कितने हैं? काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5. इसमें भी 5 स्टार्स हैं. इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5. तो इसमें भी 5 हैं. नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं? 1 2 3. और हर फ्लैग में कितने स्टार्स हैं? देयर आर 5 स्टार्स इन ईच फ्लैग. सो व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स ऑल टुगेदर? टोटल नंबर ऑफ स्टार्स कितने होंगे? हमें कैसे पता चलेगा? हम नंबर ऑफ फ्लैग्स को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टार्स ऑफ वन फ्लैग. हम लोगों ने ये दीज आर द नंबर ऑफ फ्लैग्स. हमारे पास कितने फ्लैग्स हैं? 1 2 3. 3 हमने लिख दिया. उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो एक फ्लैग पे जितने स्टार्स हैं वो 5 थे तो 5 से. 3 5s are 15. So 15 is the answer. Similarly, moving to the next one, they are talking about how many cars on the road? 6 cars. Count the cars. 1 2 3 4 5 6. So I have counted the number of cars. अच्छा. Next they are saying each car has 4 wheel. हर कार के कितने व्हील होते हैं? 4. हर कार के 4 व्हील्स हैं हमारे पास. सो हमारे पास टोटल व्हील्स कैसे आएंगे ऑल टुगेदर? हाउ मेनी व्हील्स ऑल टुगेदर? सिंपली हम लोग नंबर ऑफ कार्स को एक कार के व्हील्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज एवरी कार हैज 4 व्हील्स. सो आई हैव सिंपली डूइंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ कार्स बाय द नंबर ऑफ व्हील्स. सो 6 4s are 24. इसमें भी हमने क्या किया? टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स को एक फ्लैग में जितने स्टार्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया. इसमें भी हमने क्या किया था? जितने नंबर ऑफ ऑक्टोपस थे, एक ऑक्टोपस की जितनी टांगे होंगी उतनी सबकी होंगी ना टांगे सारे ऑक्टोपस की. तो हम लोगों ने 2 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया. Similarly, they are giving us an example of ladybird.
So there are how many ladybirds? 6 ladybirds. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many each ladybird has how many legs? 6. Count the leg of one ladybird. 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो अगर एक लेडी बर्ड की 6 हैं, दूसरे की काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, सब लेडी बर्ड्स की 6 हैं. तो उन्होंने पूछा हाउ मेनी लेग्स ऑल टुगेदर. नंबर ऑफ लेडी बर्ड्स को हम लोगों ने लेग्स ऑफ वन लेडी बर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 36. सो आई विल गेट द आंसर. व्हाट वाज द आंसर? 36. ओके, this is the concept of multiplication. How you multiply? Simply you count the number of quantity and then multiply whatever they are talking about. If they are in this part they are talking about ladybirds, so the number of ladybird is multiplying with the number of legs of one ladybird. Okay, एक की जितनी टांगे हैं उतनी सबकी होंगी. तो हम लोगों ने 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 36 आंसर आ गया. तो टोटल लेग्स हमारे पास कितनी है? सारे लेडी बर्ड्स की काउंट करके कितनी लेग्स बनेंगी? 36. ओके, एक्चुअली यू हैव टू सॉल्व पेज नंबर 54 by yourself. For solving page number 54 you have to drill table 2 to 10 first. Okay, if you find any problem you can ask me. Allah Hafiz students.